2t का इंटीग्रेशन निकालना है मीन्स हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व द टर्म t. व्हाट इज द आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ t? x. And we know that integration of x is x square by 2, so integration of t is t square by 2. Means always we relate our function to some standard result, okay, and then we find out its integration. Similarly we are going to do in Laplace transform. First of all, we are going to discuss various standard results, okay. Then while solving the problem, we are going to identify which standard result is applicable, and then we are going to use the standard result. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So first of all, let us discuss the standard result. Almost 10 standard results which we are going to discuss today, and we will solve some 2 to 3 problems on those results. So today we are going to start the second unit, which is Laplace transform. Okay. So first of all, we are going to see definition of Laplace transform. If f of t is any function, okay, if f of t is any function, then Laplace transform of f of t, this is definition, it is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st ft dt. Okay, so what is Laplace transform of any function? F of t is function consider कर रहे हैं. What is Laplace transform of any function? F of जाऊ दे आता. integration from 0 to infinity पहिला सांगतायत का? power minus st ft dt. Naturally, if you evaluate this integral, it will be in terms of t, बराबर है e to the power minus st ft dt है. s आपका जनरली पैरामीटर होता है, कांस्टेंट टर्म होती है s ये. So s is the parameter. So naturally, if you evaluate this integral, it will be in terms of t. Okay, you have to put the limits for t as 0 to infinity. So naturally, after substituting the limit, you will get a function in terms of s. बराबर है. इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करने के बाद इन टर्म्स ऑफ st आपको एक फंक्शन मिलेगा. उसमें आप t के लिमिट 0 टू इंफिनिटी पुट करते हैं तो कौन सी टर्म बची? s. So you will get the function of s. So we call it as f bar s. So always remember Laplace transform of f of t, it is written as f bar s. S is parameter of Laplace transform. ये जो s होता है इसे हम बोलते हैं parameter of Laplace transform. F of t is called as what? This f of t, it is called as object function. Okay, जिस चीज का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फंक्शन. ओके, एंड f बार s इसे क्या बोलते हैं? ये जो टोटल f बार s आपने फंक्शन लिखा इसे हम क्या बोलते हैं? इमेज फंक्शन और रिजल्टेंट. सो व्हाट इज योर इमेज फंक्शन? f बार s. So is it okay? What is definition of Laplace transform? Laplace transform of f of t, it is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st ft dt. Okay, Laplace transform of f of t is always written as f bar s. f bar s का मीनिंग ये होता है कि आप कौन से भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ s रहेगा. इन टर्म्स ऑफ s रहेगा तो उस s को हम पैरामीटर बोलते हैं. ओके, f of t, it is called as ऑब्जेक्ट फंक्शन. f bar s जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है उसे हम बोलते हैं इमेज फंक्शन. So this is about the basic definition. Now हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करते हैं. Whenever we solve any problem on Laplace transform, we always use some standard result. Okay, so on right hand side, I am writing the results which we will be using. First and the most important result is the Laplace transform of e to the power at. e to the power at का Laplace transform होता है 1 upon s minus a. Is it clear? Laplace transform of e to the power at
is always 1 upon s minus a. For example, what will be Laplace transform of e to the power 3t? अगर आप ऑब्जर्व करते हो, Laplace transform of e to the power at is 1 upon s minus a. ये रिजल्ट अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, व्हाट इज Laplace transform of e to the power 3t? एज योर a is 3, आप ऑब्जर्व कर सकते हो a की वैल्यू 3 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 अपॉन s माइनस a, दैट इज 1 अपॉन s माइनस 3. उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t क्या होगा? 1 अपॉन s माइनस 2. इज इट क्लियर? Now write down the second and the important result. The second result is that Laplace transform of 1, it is always equal to 1 by s. Laplace transform of 1 is always 1 by s. Okay, तो ये रिजल्ट हम कहाँ से डिराइव करेंगे? आपको पता है कि Laplace transform of e to the power at क्या होता है? 1 upon s minus a. ठीक है, so tell me what will be Laplace transform of e to the power 0t? e to the power at का Laplace transform 1 upon s minus a. So what is Laplace transform e to the power 0t? a is equal to 0. तो ये रिजल्ट अगर आप यूज करते हो तो इट इज 1 upon s minus 0 बराबर है as Laplace transform of e to the power at is 1 upon s minus a. So Laplace transform of e to the power 0 at is 1 upon s minus 0. But what is e to the power 0t? 0 into t will be 0. And what is e to the power 0? 1. तो e to the power 0t को आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि e to the power 0t actually e to the power 0 होगा. e to the power 0 is always 1, and on right hand side 1 upon s minus 0 can be written as 1 upon s. Okay, so which are the two important results? Laplace transform of e to the power at is 1 upon s minus a, and the second result is Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. Okay, now we are going to discuss some more result. Next result is a Laplace transform of sin at. Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Okay, और ये रिजल्ट कैसे यूज करना है? Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. So what will be Laplace transform of sin 2t? क्या होगा ये? at का Laplace transform a upon s square plus a square है, तो sin 2t का Laplace transform क्या होगा? As your a is 2, sin 80 को आप sin 2t के साथ कंपेयर करो, a is 2, so it should be written as a upon s square plus a square. इसका फॉर्मेट है, a को मुझे 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, it is 2 upon s square. अगर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t होता तो it is 3 upon s square plus 3 square. उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, Laplace transform of cos at is s upon s square plus a square. Okay, what is Laplace transform of cos at? s upon s square plus a square. तो इसका मतलब Laplace transform of cos 3t क्या होगा? What is Laplace transform of cos 3t? As your a is 3, फॉर्म s upon s square plus a square है, तो a should be replaced by 3. It is s upon s square plus 3 square. Okay, the next result is Laplace transform of sin hat. It is equal to a upon s square minus a square. सिर्फ ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं और अकॉर्डिंगली यूज करने हैं. Laplace transform of sin h is a upon s square minus a square. तो sin h 2t का Laplace transform क्या होगा? 2 upon s square minus 2 square. sin h 3t का Laplace transform क्या होगा? 3 upon s square minus a square. The next result is Laplace transform of
cos h et it is equal to s upon s square minus a square. Okay, so what will be Laplace transform of cos h 4t? Cos h 4t, a की वैल्यू 4 होगी, राइट हैंड साइड क्या होगी s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ओके, तो आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं और जब उसकी जरूरत होगी वो आपको यूज करनी है. Now, the next result is, wait a minute, which was the last one, seventh one. The next result is Laplace transform of t to the power n. It is equal to n factorial upon s to the power n plus 1. Okay, what is Laplace transform of t to the power n? N factorial upon s to the power n plus 1. That is, मुझे बताओ what will be Laplace transform of t cube. मुझे कौन सा रिजल्ट यूज करना पड़ेगा? Laplace transform of t to the power n. What is the value of n here? 3. As n is 3 here, its Laplace transform is 3 factorial upon s to the power 3 plus 1. That is 3 factorial upon s to the power 4. What will be Laplace transform of t to the power 5? n की वैल्यू 5 होगी, तो Laplace transform of t to the power 5 क्या होगा? 5 factorial upon s to the power 5 plus 1. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर आएगा, समझ में आएगा. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. First shifting property. Okay, so the property says that if Laplace transform of f of t is equal to f bar s, ये तो हम नॉर्मली लिखते हैं कि Laplace transform of f of t को हम f bar s लिखते हैं. अगर ऐसी सिचुएशन है तो Laplace transform of e to the power minus et f of t, क्या हो रहा है यहाँ पे? f of t को अगर e to the power minus et से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपको ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है. एंड इट सेज दैट इट्स Laplace transform is f bar s plus t. आ रहा है समझ में क्या लिखा हमने? If Laplace transform of f of t is f bar s, then Laplace transform of e to the power minus at f of t. अगर आप f of t को e to the power minus at से मल्टीप्लाई करते हैं तो Laplace transform में क्या इफेक्ट होता है? Originally the parameter is s, f bar s था, now parameter changes to s plus a. Okay, for example, अगर मुझे पता है कि Laplace transform of t square क्या है और Laplace transform of t cube अभी हमने निकाला था, ऊपर देखो. Laplace transform of t cube is what? 3 factorial upon s to the power 3 plus 1, which is 4. This is already known to us. If I multiply this t cube by the term e to the power minus 2t, what is happening? यहाँ पे चेक करो, t क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाय द टर्म e टू द पावर माइनस 2t. तो आपको ये क्लिक होना चाहिए जब भी किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है e टू द पावर 80 और e टू द पावर माइनस 80, इन दैट सिचुएशन ऑलवेज वी हैव टू यूज अ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, कैसे यूज करनी है? t क्यूब को e टू द पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई किया है तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म t क्यूब का ही लिखना है. फॉर्म ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी फॉर t क्यूब. t क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑलरेडी नो, 3 factorial upon s to the power 4. But as t cube is multiplied by exponential function e to the power minus 2t, what will be the effect? The effect will be on the parameter. ये जो s पैरामीटर है, 3 factorial upon s to the power 4, पैरामीटर इज s. पैरामीटर s चेंजेस टू, जैसे कि हमने बोला f ऑफ t को अगर e टू द पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई किया जाता है, पैरामीटर चेंजेस टू s प्लस a. तो इफ t क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 2t,
Parameter s changes to s plus a. But what is the value of a here? 2. Parameter changes to s plus 2. And now check how the Laplace transform can be written. Here t cube is multiplied by e to the power minus 2t, that is by the exponential term. Then I have to use the first shifting property. It is clear. T cube is multiplied by e to the power minus 2t. So first shifting property is applicable here. What is the first shifting property? Parameter s changes to s plus a. Parameter s changes to s plus a. But what is the value of a here? 2. As t cube is multiplied by e to the power minus 2t, a is 2. So it should be written as 3 factorial. Originally t cube का Laplace transform क्या था? It is 3 factorial upon s to the power 4. Now as it is multiplied by exponential term, parameter changes. So it is 3 factorial upon s should be replaced by which term? S plus a, that is by the term s plus 2. So it is s plus 2 to the power 4. So have you followed how first shifting property is used here? ये समझ में आया आपको? नहीं भी आया तो we are going to solve lots of problems on first shifting property as well as the remaining properties, so it will be more clear. और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो हर बार हम कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो भी लिखने वाले हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर. ओके, एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्म सेम होता है, सिर्फ पैरामीटर चेंज होता है. s प्लस ए e टू दी पावर 8 माइनस 80 से मल्टीप्लाई करना है तो पैरामीटर चेंजेस टू s प्लस ए, एंड इफ इट इज लाइक e टू दी पावर 80 f of t, then parameter changes to s minus a. Just remember this thing. e to the power minus 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो s प्लस a पैरामीटर हो जाता है. e to the power 80 से मल्टीप्लाई करते हैं then the parameter changes to s minus a. Okay, so these are some important properties. One more property अभी लिखे तो भी चलेगी. It is like Laplace transform of t to the power n into f of t, it is equal to minus 1 to the power n into nth order derivative with respect to s of f bar s. Laplace transform of t to the power n f of t is minus 1 to the power n nth order derivative with respect to s of f bar s. Now it will be more clear once we solve problem on this. So if you want, you can take screenshot of whatever we have discussed. now just tell me is there any doubt in the definition of Laplace transform? Laplace transform of f of t is integration from 0 to infinity e to the power minus st ft dt. This is the definition you have to remember. Okay, parameter of Laplace transform is s, f bar s is image function, f of t is object function. On right hand side we have discussed two standard result. First one is Laplace transform of e to the power at is 1 upon s minus a. Second one is Laplace transform of 1 is 1 by s. Okay, so is there any difficulty in this part? No, ma'am. No, ma'am. Okay, This is the definition of Laplace transform, and first two important results we have discussed. You can take screenshot. Okay, next, these are the remaining results. now these are the results which are based on trigonometric function and hyperbolic function. Just remember these results. You can now prepare one chart where all the standard results or properties are there. Just go through it. You will understand whenever the situation is there how that property will be particular, property will be useful. Okay, so आपको सिर्फ ये properties ध्यान में रखनी है in order to solve various problems. So is there any doubt in these properties? I have written examples also how the property is to be applied.
like Laplace transform of sin at is a upon a square plus a square. So Laplace transform of sin 2t is 2 upon a square plus 2 square. Okay. So is there any difficulty? No, ma'am. No, ma'am. Okay. These are about the trigonometric. If no difficulty is there, tell me what is Laplace transform of sin h 4t? What is Laplace transform of sin h 4t? 4 upon s square minus 4 square. Yes, very good. Laplace transform of sin h 4t is 4 upon a square minus 4 square. अभी आपने जैसे किया ना कि मैंने पूछा व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin h 4t, आपने इमीडिएटली रिकॉल किया कि कौन सा रिजल्ट हमें यूज करना है. यस, सिक्स्थ वाला रिजल्ट यूज करना है. एंड देन वी हैव अप्लाइड द रिजल्ट एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin h 4t इज 4 upon a square minus 4 square. ओके, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, बट जस्ट द प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट. and hyperbolic form, and this is a Now this property is again important. Laplace transform of t to the power n is n factorial upon s to the power n plus 1. For example, if I ask you what is Laplace transform of t to the power 7, what will be it? 7 factorial upon s to the power 7 plus 1. Yes, a Laplace transform of t to the power 7 is 7 factorial upon s to the power 7 plus 1. बहुत इजी है. सिर्फ इतना ही है इस यूनिट में कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत वेराइटी है, लेकिन आपके इसमें अगर क्लैरिटी है हाउ द प्रॉपर्टीज शुड बी अप्लाइड, देन द प्रॉब्लम्स आर वेरी मच इजी. थोड़ा सा वास्ट यूनिट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसमें. तो रिमेंबर योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन द प्रॉपर्टीज एंड द स्टैंडर्ड रिजल्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कैसे यूज करनी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. कब यूज करनी है? whenever any function is multiplied by exponential function e to the power 80 or e to the power minus 80, we have to take help of first shifting property. क्या फर्क होता है? whenever we use first shifting property, either parameter changes to s plus a or the parameter changes to s minus a. So is there any difficulty? No, ma'am. Okay, now let us solve some problems on Laplace transform. So wait a moment. now here we have Wait a moment. Let me present my screen. Yes. So is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So just observe the problem. Find Laplace transform of t cube minus 3t plus 5. Observe करते ही हमें ध्यान में आ रहा है that inside the bracket 3 different terms are present. So first thing we should do is we must apply the linearity property. What do you mean by linearity property? Laplace transform of f of t plus g of t is Laplace transform of f of t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी. या फिर सिंपल लैंग्वेज में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी. तो इसी तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म तीनों टर्म्स के लिए सेपरेट करेंगे. और मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब? विच प्रॉपर्टी विल बी यूजफुल? T to the power n. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन वो यूज करनी पड़ेगी. 3t के लिए भी 3 तो हम बाहर ले लेंगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के लिए भी वी मस्ट यूज द प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n. एंड 5 whenever constant term is there, 5
है तो हम 5 को 5 into 1 तो हमेशा लिख सकते हैं. 5 should be taken outside. It is Laplace transform of 1 and Laplace transform of 1 we know that it is 1 by s. तो ये क्लैरिटी अगर है आप बहुत इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है. Have to find out Laplace transform of TQ minus 3t plus 5. So Laplace transform of TQ minus 3t plus 5, it is equal to, now Laplace transform always follows the linearity property. So Laplace transform can be attached to the first term, to the second term and to the third term. Okay, so let us attach this Laplace transform. It can be written as Laplace transform of TQ. Now here 3 is constant, so this term should be taken outside. It is Laplace transform of t plus Laplace transform of 5. Okay, now it can be written as Laplace transform of TQ minus 3 times Laplace transform of t plus, now Laplace transform of 5. No standard result is available for finding Laplace transform of 5. So this 5 can be written as 5 into 1. Okay, 5 should be written as 5 into 1 and 5 may be taken outside. It is Laplace transform of 1. Just check what we have done. 5 is written as 5 into 1. 5 is taken outside and then we have written Laplace transform of 1. Why? Because we know that Laplace transform of 1 is always 1 by s. Now check which result is applicable for the first term and for the second term. Laplace transform of TQ. Here we can easily use the result that Laplace transform of t to the power n, it is equal to n factorial upon s to the power n plus 1, and that's why Laplace transform of TQ minus 3t plus 5, it is equal to, now Laplace transform of TQ, which result we are using? Laplace transform of t to the power n. What is it? N factorial upon s to the power n plus 1. What is the value of n here? 3. As your n is 3 here, its Laplace transform can be written as 3 factorial upon s to the power 3 plus 1. Okay, minus 3 times. Now, what is Laplace transform of t? What is the power of t? 1. As power of t is 1, again we can use the same result, that Laplace transform of t to the power n is n factorial upon s to the power n plus 1. And as our n is 1 here, it can be written as 1 factorial upon s to the power 1 plus 1. And last term, 5 is constant, and we know that Laplace transform of 1 is always 1 by s. In this way, the required Laplace transform can be written as 3 factorial upon s to the power 3 plus 1, that is s to the power 4, minus 1 factorial is 1, it is 3 upon s to the power 2, plus last term is 5 upon s. This is our required Laplace transform. Okay, so just check whether you understood the problem or not. Now, the second problem which we are going to consider is find Laplace transform of e to the power 4t cos h 5t. Okay, now just check which function we have to consider here. E to the power 4t into cos ht means our basic function is cos h 5t. It is multiplied by the exponential function. So always remember one thing, whenever your function is multiplied by exponential function, always we have to use the first shifting property. Okay, now we have to use the first shifting property. So identify which is the basic function. Our basic function is nothing but cos h 5t. Okay, our basic function is cos h 5t. So let us start with Laplace transform of cos h 5t. Okay, that means we need to find out Laplace transform of cos h 5t. Okay, now just check which result we have to use here.
cos h 5t. What is the form of cos h 5t? Which result is applicable? We know that Laplace transform of cos h a t. What is Laplace transform of cos h a t? Already we have seen the standard result. Laplace transform of cos h a t, it is nothing but s upon s square minus a square. Okay, Laplace transform of cos h a t, it is s upon s square minus a square. That's why, what is Laplace transform of cos h 5t? Just check what is the value of a here. As your a is 5, what is Laplace transform of cos h 5t? Using this result, it should be written as s upon s square minus a square. But what is the value of a here? 5. So it should be 5 square. Is it clear? Laplace transform of cos h 5t is s upon s square minus 5 square. Okay, again check. We need to find out Laplace transform of which function? Laplace transform of e to the power 4t into cos h 5t. That means this cos h 5t should be multiplied by the exponential function. And as it is multiplied by the exponential function, now we will be using the first shifting property. Okay, so we will write down that by first shifting property, if Laplace transform of f of t, it is equal to f bar s. This is always our result. Laplace transform of f of t is f bar s, means Laplace transform of any function will be always in terms of s. This is our standard result. Then by using the first shifting property, Laplace transform of e to the power at f of t. Just check what we have done here. F of t is multiplied by the term e to the power at. Then its Laplace transform is nothing but f bar s minus a. Just check what is the effect. If we multiply our function by the exponential function, what is the effect? Our original parameter is s. The parameter changes to s minus a. Is it clear? Okay. Now, let us find out Laplace transform of, consider the required function e to the power 4t into cos h 5t. Okay. Now, just check which result is applicable. Just now we have discussed that whenever the function is multiplied by exponential function, we need to use the first shifting property. Okay, according to first shifting property, Laplace transform of e to the power at f of t is f bar s minus a. That means it is Laplace transform of the function f of t only. That means here also we need to write down the Laplace transform of cos h 5t. Okay, and the Laplace transform is nothing but s upon s square minus a square. Only what will be the difference? Parameter s changes to s minus a. As function is multiplied by e to the power 4t or e to the power at, parameter changes to s minus a from s. Just check what is the value of a here. यहाँ पे a की value क्या है? 4. That means from s, parameter will be changed to s minus 4. In short, the Laplace transform can be written as s minus 4 divided by s minus 4 square minus 5 square. Okay, this is our Laplace transform. This is the Laplace transform of cos h 5t only. The same form we have written here. Only in place of s, we have considered the parameter as s minus 4. Here, if instead of e to the power 4t, the term is like e to the power 2t, parameter will be changed to s minus 2. Okay, now just simplify it. The same term can be written as s minus 4 upon s square minus 8s plus 4 square, which is 16, minus 5 square, which is 25. So is there any difficulty? Because in this problem, we have used actually two standard result.
first standard result that Laplace transform of cos h at is s upon s square minus a square, and the second standard result is first shifting property. So is there any difficulty? मैम मुझे समझ नहीं आया मैम, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों यूज हुई मैम? क्यों यूज हुई ये ध्यान में रखो. व्हेनेवर एनी फंक्शन, आपको कौन से फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है यहाँ पे बताओ. e to the power 4t into cos h 4t, cos h 5t. So always remember, whenever any function is multiplied by exponential function, किसी भी फंक्शन को अगर e to the power 80 या e to the power minus 80 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वहां पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है. ये ध्यान में रखो. अब यहाँ पे देखो ये स्टेप कि मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 4t इंटू cos h 5t निकालना था. तो मेरा बेसिक फंक्शन कौन सा है? cos h 5t. cos h 5t को e टू द पावर 4t से मल्टीप्लाई किया गया है, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है. वी गेट द हिंट दैट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके. अब cos h 5t को e टू द पावर 4t से मल्टीप्लाई किया है. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी समझ में आ गया है. कैसे यूज करनी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? हमेशा ध्यान में रखो, जिस भी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है, उस ओरिजिनल फंक्शन का ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे. जैसे कि cos h 5t को e टू द पावर 4t से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम cos h 5t का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे. क्या है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos h 5t का? s cos minus h 4 upon s minus Yes. 4 यस whole अपॉन square होता है. नहीं, cos h 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? s अपॉन s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. फॉर्म Yes, ma'am. वही रहेगा, लेकिन cos h 5t को e टू द पावर 4t से मल्टीप्लाई किया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है. देयर विल बी चेंज इन द पैरामीटर. और पैरामीटर में चेंज कैसे होता है? e टू द पावर 80 फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है, पैरामीटर चेंजेस टू s प्लस a. e टू द पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई किया गया है, पैरामीटर चेंजेस टू s माइनस a. ओके. सो सॉरी, e टू द पावर 80 से s माइनस a पैरामीटर, e टू द पावर माइनस 80 है तो पैरामीटर चेंजेस टू s प्लस a. तो यहाँ पे e टू द पावर 4t है, a की वैल्यू 4 है, तो पैरामीटर चेंजेस टू s माइनस a. a को 4 से रिप्लेस करो, s चेंजेस टू s माइनस 4. तो ओरिजिनली s अपॉन s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, उसमें हमें पैरामीटर s को चेंज करना है s माइनस 4, एंड हेंस वी हैव रिटन द रिजल्ट. सो हैव यू फॉलोड? Yes, ma'am. ओके. सो Ma'am? टुडे, यस, मैम अगर एडिशन होता तो मैम सेपरेटली सॉल्व कर देना मैम. एडिशन e to the मींस power कौन सा? 80 मैम दोनों के बीच में e to the power 80 प्लस. हाँ, अगर e टू द पावर 4t प्लस cos h 5t रहता ना, तो हम उसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लिखते कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 4t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h 5t और सेपरेटली फाइंड करते. या फिर मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है तो cos h 5t के लिए फॉर्मूला यूज करो. आपको पता है how to write down the hyperbolic function in terms of exponential function. cos h 80 क्या होता है? e to the power 80 plus e to the power minus 80 by 2. फिर मल्टीप्लीकेशन कर लो, हर टर्म सेपरेट करो, तो सभी टर्म्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 के फॉर्म में आएगी, और वो रिजल्ट यूज करके आप फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो. वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन इजियर ऑप्शन ये है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. सो कुछ अगर डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो. आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. Today we have discussed the important properties and one or two problems on the basic results. Okay. So if you want to ask any difficulty, you can ask. Otherwise, you may leave classroom. Okay. फर्स्ट प्रॉब्लम दिखा सकते हो क्या मैम? First वाला. Okay, Yes, wait a ma'am. minute. Yes, this one.
यस मैम. ये बहुत इजी है. ओनली वन प्रॉपर्टी इज अप्लाइड हियर. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक्चुअली टू प्रॉपर्टीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power n एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. मैम वो 5/s था ना मैम. 5/s. 5 को हमने 5 into 1 लिखा और 5 कॉमन लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लिखा 1/s. सो इट इज Okay. 5/s. यस मैम.